सॉरी म्यूट हो गया था क्या? Sorry. So that's what I was telling you that diurnal cycle जो है वो maintain करता है. Okay, that is circadian cycle, sleep and wake cycle. Okay, our alertness, then sleepiness, that everything will be controlled by this gland. Okay, this gland which is there, it produces melatonin. Melatonin gland is produced. Melatonin hormone is produced by this gland, that is pineal gland, and melatonin is produced by the suprachiasmatic nucleus of the hypothalamus. Okay, and this melatonin will be stored temporarily by the pineal gland. And whenever it is needed, it will be released out in the blood. Okay, thus either inhibiting the functioning of the other glands or स्टिम्युलेटिंग दैट. अगर वो इनहिबिट करना है तो मेलाटोनिन ज्यादा प्रोड्यूस करेगा हाइपोथैलेमस, ये न्यूक्लियस हाइपोथैलेमस का, एंड दिस मेलाटोनिन विल बी स्टोर्ड इन द पिनियल ग्लैंड एंड पिनियल ग्लैंड विल देन रिलीज दैट मेलाटोनिन इन द ब्लड. Okay, so melatonin which is there, it will act as a biological clock in humans. समझ में आया? So Neha, which glands are inhibited? Thyroid gland, pituitary gland, adrenal gland. These are the glands which will be inhibited by the melatonin. Okay, so pineal gland which is there, it is also known as epiphysis. Hypophysis. Hypophysis is the other globular gland which is present where attached to the hypothalamus by stalk, that is infundibulum. Hypo means niche. Epi means above. Barabar? Epi means above. So diencephalon is a part of the forebrain. So forebrain का जो रूफ है उसको क्या बोलते हैं? एपीथैलेमस बोलते हैं. एपीथैलेमस को क्या अटैच है? पिनियल ग्लैंड अटैच है बाय पिनियल स्टॉक. ओके, सो इसीलिए वो क्या हो गया? एपीफाइसिस. डायनसेफेलॉन का फ्लोर क्या है? हाइपोथैलेमस. व्हाट इज द फ्लोर ऑफ द डायनसेफेलॉन? हाइपोथैलेमस. हाइपो मीन्स नीचे, फ्लोर नीचे रहता है, बराबर. फ्लोर को अटैच है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला है हाइपोफाइसिस. अंडरस्टूड? व्हाट इज द अदर वर्ड फॉर पिट्यूटरी ग्लैंड? हाइपोफाइसिस. Clear? Now origin. What is the origin of this pineal gland? All the glands originate from some of the other germ layers. ठीक है? Got it? So वैसे यहाँ पे ये pineal gland जो है, it is originating from the ectoderm. Okay? Adrenal medulla of the adrenal gland का origin भी ectoderm है. Remember? Do you remember that? Last time हम लोग ने सीखा था वो. So embryonic ectoderm से arise होता है pineal gland. Okay, from the roof of the diencephalon. Roof of the diencephalon. ठीक है? Then location. Location, as I told you, कहाँ पे located है? Diencephalon की cavity को क्या बोलते हैं? Third ventricle. Third ventricle. Cerebrum की cavity को क्या बोलते हैं? First and second lateral ventricles. First and second lateral ventricles means first and second brain cavities are present in the cerebrum. Okay, cerebrum. And third ventricle, that is the third cavity which is there, it is present in the diencephalon. Diencephalon. समझ में आया? So location of the pineal gland or epiphysis, it is present at the roof of the third ventricle. Okay, third ventricle के रूफ पे, means diencephalon का जो cavity है उसके ऊपर रूफ रहता है एपीथैलेमस, उसको वो अटैच रहता है pineal gland by pineal stalk. Pineal stalk. Okay, so tell me the stalk of the pituitary gland. Pituitary gland is attached to the hypothalamus by which stalk? Infundibulum.
and there is no other special word for the pineal stalk. Remember that. उसको pineal stalk ही बोला जाता है. No special name like this. Okay? Pituitary stalk नहीं बोलते ना हम लोग, infundibulum बोलते उसको. ठीक है. सो इन मैन व्हाट हैपेंस, पिनियल ग्लैंड जो है वो 7 to 10 years के बाद कैल्सिफिकेशन हो जाता है उसका, तो इट विल नॉट प्ले दैट मच एफिशिएंट रोल, ओके, लाइक अदर ग्लैंड्स, बिकॉज उसका कैल्सिफिकेशन हो जाने के बाद देयर विल बी नो दैट मच स्टोरेज ऑफ मेलाटोनिन इन द पिनियल ग्लैंड. ठीक है, गॉट इट. सो दो ग्लैंड्स अच्छे से याद रखो. एक ग्लैंड थाइमस ग्लैंड है विच डीजनरेट एज द चाइल्ड बिकम्स एडल्ट, ओके, और ओल्ड पीपल में तो बहुत ही कम रह जाता है वो ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड. It becomes fatty and small in size as the age increases. Which gland? Thymus gland. Okay. And pineal gland degenerates at the age of 7 to 10 years due to its calcification. But totally पूरा का पूरा degenerate नहीं होता है, थोड़ा बहुत functioning रहता है. ठीक है. Then shape, conical in shape, बराबर. Then grayish structure रहता है, grayish red structure, because it is laden with network of blood capillaries. Tiny gland it is because उसका इतना function नहीं है body में. Then parenchymal cells, parenchymal cells, उसके cells को क्या बोलते हैं? Parenchymal cells, which are arranged in groups with neuroglial cells. Okay, neuroglial cells are the nutritive cells or else supporting cells, which are also known as nerve cells of our nervous system. ठीक है. So neuroglial cells are the nerve cells which are more than the neurons in the nervous system, which give support, nourishment, protection, okay, defense. So उसके साथ ये parenchymal cells arrange रहते हैं, ठीक है, in the pineal gland. So pineal gland is having group of parenchymal cells associated with the neuroglial cells. Okay. Hormones which are secreted by the pineal gland, कौन से hormones है? Melatonin, melatonin hormone, which is peptide hormone. Okay, so peptide hormone means protein hormone it is, barabar. So peptide hormone, that is melatonin, which is produced actually produced by the hypothalamus and stored in the pineal gland. So melatonin will be secreted whenever it is needed, and it is under the control of sympathetic nervous system. Okay, under the control of sympathetic nervous system. So biological clock rhythm maintain करता है. So remember this pineal gland which is there, active during darkness and it is inactive during light. So what happens during darkness? There is inhibition of the pituitary gland, thyroid gland, parathyroid gland, adrenal gland, gonads, pancreas. Means जो main glands है उसके ऊपर वो act करता है और उसका functioning बहुत ही कम कर देता है. Okay, इसीलिए अपने को नींद आता है. नाइट में नींद क्यों आता है? बिकॉज ऑफ इनहिबिशन ऑफ दीज मेन ग्लैंड्स. ओके, ये मेन ग्लैंड है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड इज गवर्न बाय हाइपोथैलेमस, तो उसका सिक्रेशन कम हो गया तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू अफेक्ट द gonads, it is going to affect the functioning of the adrenal gland, thyroid gland and parathyroid gland. ओके, एंड इनएक्टिव हो जाता है ड्यूरिंग लाइट, लाइट सेंसिटिव है वो, एंड आईज आर आल्सो लाइट सेंसिटिव, इसीलिए उसको पहले बोला था थर्ड आई ऑफ आवर बॉडी. ठीक है. सो इनएक्टिव ड्यूरिंग लाइट, so there will be no functioning of this pineal gland during whenever there is ample amount of light. So it will stimulate production of the different hormones which are produced by these all glands. Okay.
Then functions of pineal gland. Overall functions लिखा है यहाँ पे. I have discussed majorly many functions which are there. ठीक है. So darkness में वो inhibit करता है and sleep को stimulate करता है. Sleeplessness नहीं होता है, sleepiness आता है. Okay, नींद आता है उसकी वजह से. Then pineal gland secretes melatonin, which plays very important role in regulation of 24 hours diurnal rhythm of our body. Okay, and it also maintains rhythm of sleep wake cycle and body temperature as it is attached to the डायनसेफेलॉन. सो डायनसेफेलॉन का मेन बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कौन करता है? हाइपोथैलेमस. एंड टू सम एक्सटेंट पिनियल ग्लैंड इज आल्सो रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग डे एंड नाइट. ओके, एक स्पेसिफिक आवर में वो बॉडी टेम्परेचर थोड़ा बहुत हाई हो जाता है, नहीं तो लो हो जाता है एट दैट पर्टिकुलर पीरियड. ओके, 1 or 2 hours in a day. So that will be maintained by the pineal gland. Then melatonin, which is there, it also influences metabolism. Metabolism as it inhibits the functioning of the main glands. Okay, और उसका melatonin का secretion बंद हो जाने के बाद वो stimulate होता है. All the glands will get stimulated to produce efficient hormones. Okay, so metabolism को control में रखेगा as well as pigmentation. Pigmentation only in amphibians, okay, and some reptiles. ठीक है, so pigmentation में role play करेगा वो where in amphibians, amphibians and reptiles means lower vertebrates में. Mammals में pigmentation नहीं control करेगा melatonin. Okay, for pigmentation we are having melanin pigment which is produced by the skin cells. Okay, then menstrual cycle as well as defense capabilities. Menstrual cycle regulation is also done by them as it inhibits gonads during darkness. ठीक है, then defense capabilities भी maintain करता है, means production of WBCs in our body. Okay, got it? That is also regulated by melatonin. So this is the additional function in addition to pigmentation. So pigmentation, regulation of menstrual cycle and defense capabilities. आई बात समझ में? Now thymus. So we have done pineal gland. Pineal gland. Tell me pineal gland where it is located. Pineal gland का location बताइए फटाफट. Where is the pineal gland located? On epiphysis. On epiphysis, epithalamus, right? Epithalamus, right? Third ventricle. What is third ventricle? What is third ventricle? बताइए फटाफट. Third ventricle is the cavity of the diencephalon. Diencephalon. What is diencephalon? It is part of dash brain. Forebrain, right? Other name for pituitary. Other name for pituitary. Hypophysis, right?
Other name for pineal gland. Pineal gland. Epiphysis. Right. Hmm. Pigmentation is a function of melatonin in mammals. Is it true? Pigmentation is a function of melatonin in mammals. False. Very good. ठीक है. Melanin in mammals for pigmentation. Right, Chelsea. I'll drink water. थोड़ा तुम लोग भी पानी पी लो थोड़ा. Okay. Thymus. Thymus gland. Okay, thymus gland, where it is located, look at the diagram. Okay, thymus gland which is there, it is located in the chest region. Barabar? Just in the mediastinum. Mediastinum is the center part, barabar, of the chest region where you can see this thymus gland. And how many lobes you can see? Two lobes are there of this thymus gland, which is attached by connective tissue. Okay? And on either side, you can see lungs are there. Samjha? So, thymus gland produces one hormone, that is thymosin. And thymosin is the hormone which is responsible for maturation of the T lymphocytes, as well as it acts over the B lymphocytes to produce antibodies. So it stimulates B lymphocyte production. एज टी लिम्फोसाइट्स बनते हैं तो टी लिम्फोसाइट्स, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स जो रहते हैं वो बी लिम्फोसाइट्स को बनाने को बोलते हैं बॉडी को. एंड बी lymphocytes, when they will be produced in large quantity, they will start producing antibodies. So antibodies will bring about humoral response. Okay. See, there are two types of immune response in our body. One is cell mediated immune response. Yeah, cell mediated immune response. Okay, cell mediated immune response, which is there, it is stimulated by T lymphocytes. T lymphocytes. Okay, and humoral immunity which is there, it is stimulated by, humoral immunity means antibody production. It is done by or stimulated by B lymphocytes. B lymphocytes. Okay. So अभी ये thymus gland जो है, okay, when it gets activated, it produces thymosin. क्या produce करता है?
thymosin. Thymosin, which is there, it will then act. It will then act over the T lymphocytes. T lymphocytes बनते कहाँ पे in the bone marrow. Okay, then they will come towards the thymus gland, and when they will reach the thymus gland, these T lymphocytes which are there, these will become mature, and maturation of the T lymphocytes is because of the thymosin, which is produced by the thymus gland. So thymosin is the hormone which will bring about maturation. मैच्योर करवाएंगे, एक बार मैच्योर हो गए बाद में वो डिफरेंशिएट भी हो जाएंगे T lymphocytes. ठीक है? So thymosin will bring about maturation and differentiation of T lymphocytes. T lymphocytes. समझ में आया? So very important role which is done by thymus, that is maturation and differentiation of the T lymphocytes. Okay, T lymphocytes बनते कहाँ पे है? Bone marrow में, but उनका maturation और differentiation किधर होता है? Thymus में होता है. क्यों होता है? Because thymus is producing thymosin. Okay, so isn't it thymosin hormone very much important? Because T lymphocytes अगर नहीं बने तो there will be no stimulation of B lymphocytes, and if there is no stimulation of B lymphocytes, there will be no production of antibodies. And if antibodies are not produced in sufficient amount, our body will be prone to many diseases and will suffer from many diseases at a time. समझ में आ रहा है आपको? So very important function of thymus, it induces cell mediated immunity, and through cell mediated immunity it will stimulate humoral immunity by production of antibodies. समझ में आया? Any doubts here? ठीक है, आगे जाते हैं. Okay, अभी degeneration. B lymphocytes produces antibodies. Neha, T lymphocytes will stimulate bone marrow to produce more B lymphocytes. ठीक है, बोन मैरो को वो ऑर्डर देता है टी लिम्फोसाइट, हेल्पर टी लिम्फोसाइट. There are different types of T lymphocytes: helper T lymphocytes, suppressor T lymphocytes, memory T lymphocytes. Okay, so उसमें से helper T lymphocytes bone marrow को stimulate करता है, बोलता है बहुत ज्यादा B lymphocytes बनाओ, फिर B lymphocytes ज्यादा बनेंगे, and then B lymphocyte का काम क्या है? To produce plasma cells, and plasma cells will produce antibodies. So isn't it B lymphocytes are producing antibodies because of T lymphocytes? समझ में आया? B lymphocytes produces antibodies. Remember. Clear? Okay. चलो आगे जाते हैं. So thymus, which is there, it is small at birth. Okay, so during birth it is quite small, and as the baby's body come in contact with different antigens, then uska size thoda thoda बढ़ते जाता है, and जैसे ही when that child reaches puberty, what happens? The size of the thymus will start decreasing. So maximum size of the thymus is there during puberty. Okay, ये याद रखो, very important question which can be asked in exam. The gland which degenerates as the age increases, and it becomes fatty. So that gland is thymus gland. And maximum size of which gland, maximum size reach होता है at puberty, which gland it is? Thymus gland.
Okay. So during adulthood, it shrinks to its size and okay, to its size at birth. So birth के टाइम जितना छोटा साइज था उतना वो छोटा हो जाता है when the child becomes mature. समझा ये बात है. आगे जाते हैं. सो फैटी हो जाता है वो. हाँ. और पिनियल ग्लैंड जो है वो उसका कैल्सिफिकेशन होता है. रिमेम्बर दैट दिस बिकम्स फैटी एंड एज द एज इंक्रीजेस एंड पिनियल ग्लैंड का कैल्सिफिकेशन होता है आफ्टर 7 to 10 years आफ्टर बर्थ. So in old persons, what happens? Thymus gland is degenerated, resulting in decreased production of thymosin. बराबर. ये एक्सप्लेन किया मैंने. जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे उसका साइज कम होता जाता है एंड एक बार बहुत ज्यादा कम हो गया तो लेस प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन विल बी देयर. सो उसकी वजह से क्या हो सकता है बताइए. लिख दिया है यहाँ पे. ओल्ड पीपल में इसका साइज बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है. तो इसका काम क्या है थाइमोसिन का? इट ब्रिंग्स अबाउट मैचुरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स. तो टी लिम्फोसाइट्स का मैचुरेशन डिफरेंशिएशन बहुत ही कम हो जाएगा एंड टी लिम्फोसाइट्स विल नॉट स्टिमुलेट द बोन मैरो टू प्रोड्यूस that much amount of B lymphocytes. So there will be deficiency of T lymphocytes, deficiency of B lymphocytes, resulting in deficiency of antibodies. And if there is deficiency of antibodies, it will affect the immune system. Our immune system will not be able to cope up with the attack of antigens. Okay, so that so because of that old person's body will be prone to many infections. होता है ना ऐसे. एज होने के बाद बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगता है उनको और बहुत ज्यादा जल्दी इन्फेक्शन होता है जैसे कि कोरोना का है ना. मोस्ट ऑफ द ओल्ड पीपल died because of corona pandemism है ना. it is because of low immunity. और यंग इंडिविजुअल्स का भी इम्यूनिटी लो है तो उसको जल्दी कोरोना हो जाता है ना. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस. सो ओल्ड पीपल में बिकॉज ऑफ डिजनरेशन ऑफ द थाइमस. So the immune response of the old people becomes weak, which is often said to be cause of the process of aging. तो इसका मतलब ये नहीं है जिसको जिसको इम्यूनिटी लो है अभी तो उसका एज हो गया. सो किसी को चिढ़ाओ मत ऐसे. फिर कभी कभी होता है ऐसे कि किसी किसी का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं रहता है. देयर आर सेवरल फैक्टर्स फॉर दैट. नॉट ओनली वन फैक्टर इज देयर. सेवरल फैक्टर्स आर देयर फॉर. ओके. सो ओरिजिन ये एक पेज पे लिखा है व्हाट एवर वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ. ओके. सो एंडोडर्मल इन ओरिजिन. एक्टोडर्मल पिनियल ग्लैंड. एड्रिनल मेडुला ऑफ एड्रिनल ग्लैंड. ये एक्टोडर्मल था. बराबर. मेसोडर्मल एड्रिनल कॉर्टेक्स इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन. ओके. जब भी आप लर्न करते हो ना ओरिजिन एक साथ सब लर्न कर देने का टेबल बनाने का. एंड कॉमन क्या है? एक्टोडर्मल क्या ओरिजिन है, विच ग्लैंड्स. एंडोडर्मल विच ग्लैंड्स मेसोडर्मल इन ओरिजिन. लाइकवाइज कंपैरेटिव स्टडी करो. कंपैरेटिव स्टडी करेंगे ना तो इजीली दिमाग में रहता है. नहीं तो क्या है सेपरेटली आप यू लर्न सेपरेट लर्न कर रहे हो तो आपको याद रहेगा तभी के लिए. देन आफ्टरवर्ड्स अगेन यू विल फॉरगेट. सो व्हाट इज द कलर? पिंकिश ग्रे. और वहां पे क्या था? ग्रे रेडिश. पिनियल का रेडिश ग्रे. एनीहाउ
pyramidal gland है, pyramidal in shape. Two lobes which are closely held together by the larger connective tissue. Okay, so each lobe is composed of tiny lobules. जैसे कि liver में भी lobules रहते हैं बहुत सारे. Even we have seen structure of the testis. Okay, जिसमें कि lobules रहते हैं and हर एक lobule में seminiferous tubules are present. है ना? So each lobe is composed of tiny lobules held together in capsule by connective tissue. Okay, so connective tissue in a capsule. So actually ये थोड़ा wrong हो गया sentence. Each lobe is composed of tiny lobules held together in a capsule by connective tissue by connective tissue. Capsule made up of connective tissue. Capsule made up of connective tissue. Always remember, be it be any of the internal organ, liver, pancreas, lungs, okay, kidney, or else thymus gland, thyroid gland, सबका ये internal organs जो है, they are protected by connective tissue. Especially which one? White fibers, because white fibers give tensile strength and rigidity. ठीक है? Then hormones, क्या? Thymic hormone, thymosin, that is polypeptide hormone. Okay? Then largest size of the thymus and most active childhood में रहता है. This I have already explained you, and these are the different functions which we have already done. One more extra function of this thymus, it hastens sexual maturity. Sexual maturity. So sexual maturity is not only done because of activity of FSH and LH and gonadocorticoids. Along with these all, sexual maturity will be fastened by thymosin also. Okay, so remember this. Options में पूछा जा सकता है. Okay, thymosin. Thymosin, then ICSH भी आया तो भी करेक्ट है. सेक्सुअल मैच्योरिटी इनिशिएट करते हैं ना ये सब, गोनेट्स के ऊपर एक्ट करते हैं. क्लियर? सो ओवरऑल क्वेश्चंस आते हैं. ऐसे तो सेपरेटली लर्न किया तो सब इजी लगता है, बट व्हेन यू कोरिलेटेड द टॉपिक एंड solve many MCQs, you come to know that okay, difficult level के questions ऐसे भी रह सकते हैं. So always you should correlate the topic and learn. आई बात समझ में? So यहाँ तक हो गया अपना. So today we have finished with the pineal gland and thymus, or disorders of the gonad due to hypo and hypersecretion of the gonads, that is hypogonadism. ओके, वो स्टडी किया हम लोगों ने. अभी 2 मिनट 1.5 मिनट बाकी है. 1 मिनट 1 कितना हुआ? 10:20. तो एक्सक्रीशन का कुछ किसको डाउट रहेगा? दोज विल अटेंड द नेक्स्ट मीटिंग विच आई विल बी. हाँ, हम लोग कंटिन्यू रखेंगे 10 मिनट के लिए. 1 मिनट के बाद एंड होगा मीटिंग. सो थोड़ा टाइम लगता है मुझे एंटर करने के लिए नेक्स्ट मीटिंग के लिए, बिकॉज रिकॉर्डिंग चालू है ना. सो रिकॉर्डिंग के लिए वो कन्वर्ट होने के लिए थोड़ा 5 मिनट लगता है उसको. ठीक है? सो सेम लिंक पे आपको क्लिक करना है, और जिनको डाउट रहेगा एक्सक्रीशन में, दोज विल ज्वाइन द मीटिंग. ठीक है? और आपने क्वेश्चंस नहीं भेजे मुझे. मैंने बोला था आपको एक्सक्रीशन का कुछ डाउट रहेगा तो क्वेश्चन भेजो मुझे. नेहा ने एक क्वेश्चन भेजा है मुझे.
only 1 minute is remaining now. समझा मैं क्या बोली? जिसको डाउट है वो नेक्स्ट मीटिंग, अभी जो मैं मीटिंग लेने वाली हूँ 10 मिनट का, उसमें रिज्वाइन होंगे. सेम लिंक विल बी देयर. समझ रहे हैं आपको मैं क्या बात कर रही हूँ?